Hello, everyone. Good morning. And here we are with the daily news analysis. I hope I am properly audible and properly visible. And let's have some particular fun for today. All right. Yes. So the thing is, काफी different news रहे. There are some good news. There are some bad news. Right. Good news you might get तुम जिस भी party के supporter हो, but I think you have followed the Maharashtra election. Yes or no? हाँ भाई सब like it was a vibrant election. In Pakistan, न्यूयॉर्क, बांग्लादेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पता नहीं किस किस चीज का डिस्कशन हुआ है. That is a local body poll है ना म्युनिसिपल इलेक्शन में ये पर्टिकुलर बातें हुई हैं. So it was a different election. Hello Daksh, hello Rishparna, hello Sahil. So this was something which is different version. So बीजेपी won BMC या बीजेपी and it's a lie. हम बात करेंगे उसकी भी. That's completely fine. इसमें रोने वाली बात नहीं. That's democracy. Yeah? Yes, democracy has its own pros and cons. Yeah. It was good. The way people came out with their problems. है ना? मैंने videos देखे. I followed the Twitter entire day during the voting and after the voting and then okay, hello, good morning. So I realized people have started getting aware about the flaw in the process, and people came out with those flaws, and I hope Election Commission will definitely go for correcting those flaws which they have seen, and it's completely fine. Like there is no system which is perfect, but we should actually work making them perfect. All right. So that is what we are going to see. So let's have some fun news first. They dragged Mamdani. Mamdani ने भी बहुत जगह बातें की हुई है यार. Mamdani dragged himself at several places. Yeah, he talked about Gujarat riot. He talked about क्या नाम है उसका Umar Khalid's bail. He talked about some other issues. So yeah, he also dragged himself at different places. So people, if people are dragging him in the election, that's completely fine. वो तो बेचारा वो है लंदन का मेयर वो he got a feeling like कि मुझे क्यों तोड़ा. So this is this happened actually happened. So let's have some the news जो आपको अपने हिसाब से follow करनी चाहिए for the CLAT purpose. So first news जो है वो है about the Justice Verma case. Right? Yes. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ वर्मा की जस्टिस वर्मा की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी नहीं होगी. हाँ, है ना. और वो सीधे तौर पे जाएगी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें मेथड में जाएगी फॉर impeachment and something. So वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. Joint committee for both the houses are already in the motion. So that is the news जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए. सेकेंड जो न्यूज आ रही है वो झारखंड हाई कोर्ट से है. और झारखंड हाई कोर्ट जो है उन्होंने पुलिस एक्शन ऑन ईडी अगेंस्ट ईडी उसको स्टे किया हुआ है एंड ईडी पर्सनल्स को सीआईएसएफ की सिक्योरिटी सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी फोर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करके अपना काम आगे वो करने को कहा है. राइट. पुलिस एक्शन टर्म्ड एज प्राइमरी फेशिया प्री प्लान. उन्होंने ये भी बोला कि ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो चलती रहे. स्टेट वर्सेस सेंट्रल एजेंसीज वाला काम ना चले. तो थोड़ा सा फेडरल टेंशन थोड़ा सा मिसयूज ऑफ द पावर ये दोनों आप देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे. थर्ड वन इज इन इंडिया ईरान. यस. मोस्ट प्रोबेबली चबहार पोर्ट जो है वो दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम आवर पर्टिकुलर हैंड. सो देयर इज लाइक सी फेरर्स एज वेल जिन्होंने डीजल चुराने की कोशिश की. सो वी हैड सीन दैट डिटेंशन. है ना. मरीन टाइम लेबर कोस्ट जो वो कन्वेंशन है उसके अंडर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चबहार पोर्ट तो था ही. जावार पोर्ट भी यूएस सैंक्शंस के कारण जो है हमारे हाथ से जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ strategic loss because Chabar port was a very much required. We have already invested like I guess $120 million on that particular port. Strategic importance थी. हम उससे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान इनका एक्सेस करते थे. एंड जो हमारे पास चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए दिस पोर्ट वाज वेरी मच नेसेसरी. So we'll discuss about it in detail.
Right. Then again, fourth most important one is Maharashtra म्युनिसिपल इलेक्शन. ये भी एक जरूरी चीजें थी. Make sure to follow it. Right. For Maharashtra. Is not like if I'm not wrong, there are 79 people who got victory in Maharashtra poll election without any competition, and it's the largest. Yeah, Vishwana, there are a lot of things. So Maharashtra election, and fifth one is Startup India. Yes, Startup India completed like 10 years, and as you can see, the front news, which is saying 44,000 new startups were registered in 2025, says our PM. So, according to reports, India is the third largest ecosystem for startup, and fund and focus on AI, quantum, defense. These are something जिसको थीम बना के आगे स्टार्टअप जो है वो किया जा रहा है. So स्कीम है गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप इंडिया उसके अंडर. मूविंग ऑन, these are the most important one. ठीक है. एक इंडिया ईयू ट्रेड डील जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड पैक्ट, ये भी न्यूज में था. हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. So just a minute, let me have some water. Justice Verma case, have you heard about it? We had discussed this. Yes. So ये काफी लंबी समय से चला आ रहा है. इंडिया, यस, जापान मीटिंग, अभी उसके बारे में भी अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे. दीज आर मेजर जो इनको फोकस करना फॉर नाउ. चलो, तो जस्टिस वर्मा के केस से शुरू करते हैं कि क्या सीन है, क्या कहानी है. So, constitutional safeguard for judges cannot come at the cost of paralyzing the removal process itself, says Supreme Court. Yeah. मेरा कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का, जो जस्टिस वर्मा ने एक वो किया था, प्ली किया था, राइट, वो दैट इज समथिंग, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए कि वो बन जाए पैरालिसिस टू द रिमूवल प्रोसेस इटसेल्फ. Right. So, Supreme Court dismissed that plea. Where Justice Yashwant Verma, the Allahabad High Court challenged the legality of the three-member inquiry committee constituted by the Lok Sabha Speaker for his impeachment. Right. Yes. The Lok Sabha Speaker's authority is like form. That is what Supreme Court is saying कि जो लोक सभा के स्पीकर हैं, उनकी जो अथॉरिटी है फॉर दिस, दैट इज फॉर्म एंड established. उन्होंने वैलिडिटी ऑफ प्रोसेस में सीधा बोला था, कोर्ट इज विद द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा पावर टू एक्ट when the chairman is absent, and stated that the rejection motion of Rajya Sabha does not invalidate a motion in the Lok Sabha. So उस टाइम पे रिमेम्बर वो नहीं थे, हमारे पास चेयरमैन नहीं थे. तो उस टाइम पे जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने वो पर्टिकुलर मोशन राज्यसभा में वो किया था. तो उसके लिए भी उन्होंने लीगैलिटी वो करने को बोला, चेक करने को बोला था. सुप्रीम कोर्ट says कि that's complete fine. If we don't have chairman, the deputy chairman performs the duties of the chairman. So it is valid and it is legal. इन हाउस कमेटी की जो रिक्वायरमेंट है मिसकंडक्ट के लिए, वो उन्होंने डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने. पार्लियामेंट्री impeachment process is set to be processed. Yes, जस्टिस वर्मा का जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के सामने जाने का डेट है, वो है 24 ऑफ 24 को वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे, इंक्वायरी कमेटी के पास, विच इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स इम्पीचमेंट प्रोसेस. सो ही इज सपोज टू गो देयर. जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जो हुआ था, that was he was in a vacation with his family when there was a fire on his house, and in the storeroom, in the like quarters of servant quarters, you can say, they found tons of money. Some says 5 crore cash, some says 15 crore cash, and that came under the misconduct. और तभी से ये कहानी शुरू हुई. And he demanded in-house particular committee, but people was like कि नहीं. Supreme Court says कि no, we are not going to give you in-house committee. The process of impeachment in the both the houses of Lok Sabha and Rajya Sabha, like Parliament, is correct. Now, next one is Mahayuti sweeps the municipal cooperation election in the Maharashtra. Anybody Mahayuti किसका alliance है? कौन कौन सी parties हैं?
No? Okay, so Mahayuti is an alliance between BJP, Shiv Sena, Eknath Shinde, right, sorry, and NCP, Ajit Kumar. Yes. Yeah. Technically, these are the three particular parties which part of it. So, अगर बात करें तो महायुति that is comprising of BJP, Shiv Sena, Eknath Shinde group, Ajit Pawar, and NCP. They have achieved landslide victory in the Maharashtra local body election, and they have captured, I guess, 25 out of 29 total municipal cooperation. Yes, the result that was declared in the last day. इसमें ये सारी चीजें उन्होंने and this is a kind of like अगर मैं बात करूं तो there were 3 decades where the dominance in like municipal cooperation in Mumbai was of Shiv Sena Thackeray family, right? Yes, Thackeray family dominated this particular Mumbai municipal cooperation for almost 30 years. Last election was conducted in 2017, I guess. And even though at that time this was under the Shiv Sena, that is Uddhav Thackeray group. But technically that was Shiv Sena at that time. It wasn't divided, so Shiv Sena we can say. So that is what happened. And for now, it's being challenged and it's being changed. So this is happening after so long, like long period of time. When you're looking at 30 years, 30 साल से particular ये चीज थी. So अगर मैं बात करूं बीएमसी की, दैट इज बृहनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना? बृहना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या टेक्निकली बृहनगर दैट इज मेट्रोपॉलिटन, है ना? बृहनगर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, they have secured, like Mahayuti has secured a clear majority in India's richest civic body. Yes, this is actually the सबसे अमीर richest civic body of like India. They have got, I guess, 118 seats out of 127. Sorry, 227. Not that kind of. And BJP emerged as the largest single party. They had 93 seats, and they are going to have the first BJP mayor in the Vihnagar Municipal Corporation. स्टेट वाइड अगर देखा जाए तो बियॉन्ड मुंबई अलायंस ऑफ द सिटीज इंक्लूडिंग पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, and majority of cities, right? They are under the control of Mahayuti now. In terms, not the control, the municipal corporation is under their control. Now, opposition, which was termed as Mahavikas Aghadi, that is MVA, है ना, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, that was not at all good. So MBA had seen like significant losses, and क्या कहना चाहिए, most urban centers जो है, most urban cities जो है, where Mumbai का sorry Maharashtrians are living, the Shiv actually Uddhav Thackeray got kind of lost. Yes, so but they came together, Thackeray brothers, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray, and they fought election in Mumbai, but that is not something that came out well. Now, last year, like 288 municipal councils जो थी overall fashion में पूरे स्टेट में, उसमें 207 में थे, and this year it is not at all like in a good condition. So yes, again थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास जो strong opposition होना चाहिए वो नहीं है, because Mumbai, I like keep visiting Mumbai. Mumbai is one of my favorite city. People are good, and people are lovely actually in that particular city. I'm not sure like why people doesn't like Mumbai. Yeah, a bit crowded. There is local, there is metro, there is autos, there are like crowd in the footpath everywhere. But majority of them are peaceful people. 99% of them are peaceful people, and they love helping each other because they are still suffering with their own particular problems. So बारिश, that is random. So कभी बारिश हो जाएगा, एक आधा घंटा से ऊपर हो गई तो पानी भर जाएगा. Now they have to swim. I also swim like in such kind of conditions. Roads and never-ending construction
is always a problem. Yeah, right. So yes, they had problem. Let's hope for the best. The new government, the new municipal corporation might help though, like solving those problems. क्योंकि वहां पे ही चलता रहता है ना मतलब मुंबई undoubtedly one of the best cities in the world to live. सेफ है and लोग अच्छे हैं बट जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफी कुछ वो होगा ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सबसे पहले बात करते हैं अगले न्यूज की दैट इज नाइन सॉरी जो स्पीक नेक्स्ट प्लीज सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ तेलंगाना एमएलए सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड 10 तेलंगाना 10 एमएलए थे विच एक्चुअली चेंजेस देयर साइड उसमें से मतलब कई लोगों के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन के वो लगे हुए थे स्पीकर डिसमिस्ड राइट एंड दे हैव ऑल द राइट टू डू दैट बीएसआर जो थी दैट इज भारत राष्ट्र समिति है ना जो तेलंगाना में अपोजिशन में है दे हैव इनिशिएटेड दिस मूवमेंट कि भैया ये मेंबर्स जो है इन्होंने अपना अलायंस छोड़ के दूसरे उसमें जाने की कोशिश की है सो यू शुड डिस्क्वालीफाई देम एज अ एमएलए बट द स्पीकर डिनाइड एंड वो कंटिन्यू चला एंड दैट इज द पावर ऑफ स्पीकर कि वो ले सकते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ वांट टू चैलेंज चैलेंज इट राइट नेक्स्ट CPI Marxist जो है they met and pledged to resist anti-people policies of the center. Yes, Central Committee of Communist Party of India Marxist on Friday pledged to mobilize people in a resistance against the BJP-led union government, anti-agricultural, anti-worker, anti-farmer, anti-people laws and policy which they are being like put on the people. So they want कि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है मार्क्स की हम उसके तहत जो भी एंटी पीपल एंटी एग्रीकल्चर एंटी फार्मर राइट एंटी वर्कर आइडियोलॉजी होगी हम उसके साथ क्या करेंगे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे राइट या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन केरला एक्टिविस्ट बुक फॉर रिमार्क ऑन द कोर्ट वर्डिक्ट ये तो रेगुलर न्यूज होने लगी है मतलब एक्टिविस्ट लोगों को जेल भेजना इज समथिंग लाइक आस्किंग समवन फॉर अ कॉफी डेट Yes, Ernakulam Central Police on Friday booked the trade unionist Charles George for allegedly making provocating statement against the judge Hani M. Varghese, who delivered the verdict in 2017 like actor rape case. Yes, ये थोड़ा सा चीजें हैं मतलब यस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड राइट टू डिसेंट इनमें थोड़ा-सा अभी डिबेट चल रही है। Yesterday I was watching one of the like I was reading one of the editorial, right? And इस editorial में ये बोला गया था कि there is a very thin line against right to dissent and like where you are insulting the court, right? But not every time people or the government can actually put that curtain away and dissent को ये सीधे तौर पे क्या बना देते हैं? इंसल्ट बना देते हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है एंड जल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश जल्लीकट्टू व्हाट इज़ जल्लीकट्टू एनीवन? गाइस दैट इज़ लाइक वी क्रिटिसाइज़ पीपल जल्लीकट्टू क्या होता है? बताओ? No? So, this particular just a minute, let me change the and Andhra Jallikattu, yeah, tradition of Pasuvala Panduga, right? This is something, not a sport, in which like um, tons of youth, minors or adult or they came together and they are having kind of race with the bulls or like fight with the bulls and something like this. And this is something जो थोड़ा सा दोनों aspect में whether that is एनिमल क्रुएलिटी की बात कर लो या सेफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात कर लो माइनर्स जो है वो सेफ नहीं होते इस एनवायरनमेंट में बिकॉज दैट्स लाइक बुल्स आर रनिंग अराउंड विद द वेरी हाई स्पीड एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक जो बहुत लंबी डिबेट चली थी
यस, आई मीन कोर्ट ने भी काफी वो किया था, एल्डरली वुमेन हो, यूथ हो, इन सबको इंजरीज हुई हैं इवेंट में। और अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट पीसफुली ही गया, बट दैट इज समथिंग जो कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि हाँ, किस तरीके के स्पोर्ट्स को हम वो करेंगे, बट ट्रेडिशंस आर ट्रेडिशन, सो कोर्ट ने भी अलाउ किया। चलो, SEC center reply on Iran's detention for the in 16 Indian seafarer. Yes. The thing is, इसको हम थोड़ा सा उसमें जाते हैं, है ना? स्पेन की बुल फाइटिंग अलग है, रशपर्णा, बच्चे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना? हम बात करेंगे उसकी, दोनों चीजों की बात करते हैं यहाँ पे। सो देर आर 16 इंडियन हु वर डिटेन्ड फ्रॉम द ईरानियन अथॉरिटीज, राइट, for diesel smuggling. Yes, that is what we got to know. And they were detained, and the family members of those particular people who were detained, they said the government is not providing the required help, है ना? इसलिए SC और SC ने क्या बोला हुआ है, गवर्नमेंट से, टू प्रोवाइड द काउंसलर access to all the detainees and complete the probe and facilitate repatriation थ्रू द इंडिया, कि हाँ भैया इंडिया वापस बुलाने की प्रोसेस करो। नाउ, इससे ज्यादा जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, दैट इज चाबार पोर्ट। यस, चाबहार पोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ा जो बेसिक आप जानते हैं मैं रिपीट करता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान। We are building that port for our benefit, for our access in the Central Asia and in Afghanistan. Through this, we actually like kind of violate, और वो kind of like जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है, हम उससे ऊपर उठ के we are canceling those particular things. तो uh, अब जो particular problem हो रही है वो ये है कि दिस पर्टिकुलर जाबार पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ये US सैंक्शन के कारण थोड़ा सा व्हाट वी कैन से सैंक्शन थ्रेट कह सकते हो, एंड यू कैन कॉल इट स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट, दैट इज व्हाट पीपल आर कॉलिंग इट, राइट? बट जो experts हैं, the experts are telling that this is something which we can say that, like, we are losing Chabahar port in the Iran because of Chacha Trump. जी हाँ भाइयों बहनों, यस, सॉरी, this moron, like, he decided like not to stop. Every weekend he is loading a new lafra, एंड दिस टाइम इट्स इंडिया ईरान, क्योंकि वो चाहता है कि हम ईरान और रशिया जैसे कंट्रीज को सपोर्ट करना बंद कर दें, जिन्होंने प्रॉब्लम के टाइम पे हमें सपोर्ट किया था। Yeah. So, India remains engaged with both United States and Iran about ways to continue operation at the port of Jawar in the south eastern Iran. Right? That is what India's official said. Now, opposition का ये कहना है कि we lost Jawar port because of Trump and Iran. Right? But officials are still saying that we are having waiver up to April 2026. So we are still in the talks and something like this. So India's relationship with Iran has come under the renewed stress since US President Donald Trump announced that the new round of tariff on January 12th, saying that any country that wants to trade with the US while maintaining the trade ties with Iran would be subjected to an extra 25% tariff. Yes. So अमेरिका की तरफ से ये पर्टिकुलर लॉ आया है कि if anybody wants to trade with America and they are still having a trade ties with Iran, they might be subjected to 25% extra tariff. Yes, and इसके बाद से अमेरिका, सॉरी, इंडिया एंड ईरान के बीच में जो ट्रेड है, जो चाबार पोर्ट है, भाई, if अमेरिका was like not that powerful economy ना, कसम से इसको ना ईमानदारी से सारी की सारी कंट्रीज के स्टेट हेड ना इसको अलग से कंबल को नहीं करते,
बट क्या कर सकते हैं, अभी के टाइम पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो अपन इसको झेल रहे हैं। खैर, वो आगे की बात करते हैं। फॉर नाउ अगर मैं बात करें एक्टिव सैंक्शन वीवर की, तो अप्रैल 2026 तक के लिए हमारे पास क्या है, द सैंक्शन वीवर है दैट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 2025. Right. So, India is currently operating under the 6-month conditional sanction waiver granted by the US Department of Treasury by October to April. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसकी सॉरी प्रेशर क्या है, उसकी बात करते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट फेसेस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट एंड इंडिया शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमें बोली गई है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? अगर हम इंसुलेट करते हैं, अगर हम स्टेट रन एंटिटीज की बात करते हैं, तो ओवरऑल हमने कुछ 120 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लेस जो हमें चाहिए, इंडिया को चाहिए। राइट। तो अगर मैं इंसुलेट करूं स्टेट रन एंटिटीज को, पोटेंशियल मेजर्स को, तो इंडिया जो है उसे अपना एक्सपोजर जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड जो बोर्ड है, जो इंडिया बोर्ड ग्लोबल लिमिटेड है, दैट इज आईपीजीएल, वहां पे भी इंडियंस की मेंबरशिप कम करनी पड़ेगी। बट But we are still in the negotiation with the US. Our negotiation with the Americans are continuing, and we will talk up to the case of Chabar Port, where we like to be present. An official said without ruling out India as renewing its work in the Chabar. So with both the side, दोनों साइड से ये बात चल रही है। So एक साइड बात ये है कि भाई साहब, opposition and some experts are saying कि we already lost Chabar, बट हमारी तरफ से वो चल रही है, एंड वो बात चल भी रही है, बिकॉज वी स्टिल हैव टू फाइनलाइज अ प्रॉपर ट्रेड डील विद द अमेरिका। कुछ लोग कहना है कि लो, चाचा ट्रम्प का कहना है कि उसने फोन नहीं किया, उसने फोन नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बट यस, बैकडोर टॉक्स आर ऑलरेडी लाइक इन द प्रोसेस, आई थिंक, एंड दे विल डेफिनेटली कम आउट विद द सोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज कि जो चीज हुई है उनकी बात करें तो मई 24 में, right, Iran signed a 10-year bilateral contract of the operation of the Shahid Bashidi terminal. And the deal में India committed some $120 million already, right, for equipment, and $250 million for line of credit फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये 2024 में ऑलरेडी हो चुका है, एंड मोदी जी ड्यूरिंग द इलेक्शन, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 2024 जनरल इलेक्शन के टाइम पे, ही आल्सो मेंशन्ड दिस चाबार पोर्ट डील एज वन ऑफ हिज मोस्ट हिस्टोरिक इकोनॉमिक सक्सेस। राइट। तो ऑलरेडी हमने 120 मिलियन या 250 मिलियन जो है उसके इन्वेस्टमेंट में जा चुके हैं। रेलवेज के प्रोग्रेस है, सो देर इज पर्टिकुलर 750 किलोमीटर चाबाहार जैदान रेलवे लाइन, जो कि क्रिटिकल है नॉर्थ साउथ को ऐड करने के लिए ईरान में। उसका काम भी शुरू हो चुका है। एंड जो पर्टिकुलर अब प्रॉब्लम है उसमें और भी चीजें हैं कि जनवरी 2026 में ईरान के जो वो है फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरगाशी, ही इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द पोर्ट प्रोजेक्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी, लाइक, और वो भी तब जब ईरान में इस तरीके का अनरेस्ट चल रहा है। तो यस, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। नाउ जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा, तो दैट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। 2023 2024 की अगर बात करें, तो पोर्ट में कुछ 43% वेसल टैरिफ जो है वो बढ़ा है, 34% कंटेनर टैरिफ बढ़ा है। सो यस, द स्पोर्ट इज ग्रोइंग वेरी वेल, बट ये जो ट्रम्प करेगा उसके बाद ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। फिर जाबार ऑल्सो इज अ वाइटल रूट फॉर providing help in Afghanistan and certain part of Central Asia. फिर एक की इंडियन काउंटर है तो पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, जो चाइना डेवलप कर रही है, जिसके थ्रू वो जाना चाहते हैं कहाँ, सेंट्रल एशिया में। तो बोथ द पर्टिकुलर केसेस, ये एक पर्टिकुलर चीज ऐसी है जहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। Yes, and I'm pretty much sure our officials and our ministers are smart enough that they are uh, like not going to leave this particular place easily.
यस, मतलब जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके मामले में तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे मिनिस्ट्रीज, हमारे अदर पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो डेफिनेटली पार्ट रहेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी कम आउट एज बेस्ट. नाउ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी न्यूज़ करते हैं. सेंटर ब्लॉक्स 242 इलीगल बेटिंग एंड गेमिंग वेबसाइट. और ये चल रहा है किसके अंडर? देयर इज दिस एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025. उसके अंडर उन्होंने 242 इलीगल बैटिंग एप्स जो हैं उनको, जो वेबसाइट है गैम्बलिंग की, उसको बैन किया, ब्लॉक किया हुआ है. Remember those ads in Instagram from the Instagram influencers and some other like random ads that you are getting in your games, in your YouTube, right? सो ये पर्टिकुलर चीजें जो है उसके कारण मतलब वो जो देख रहे हो उनमें से 242 इलीगल बेटिंग एप्स को किया गया. Doesn't US face any problem after this much tariff? They face problem. जब पहली बार उसने टैरिफ टैरिफ चिल्लाया था, तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एक्चुअली called him a fool. Yes. I mean, think about it. Trump in front of China becomes a, like वो होता ना. Have you seen that movie चुपके चुपके? Yeah, right. Yes. जिसमें परेश रावल होता है, राजपाल यादव होता है. तो लाइक राजपाल यादव एंड परेश रावल में अथॉरिटी परेश रावल के पास होती है. एंड राजपाल यादव इज एक्टिंग लाइक ही इज अथॉरिटेरियन. लाइक रिमेम्बर, मालिक आज हम डिसाइड कर ही लेते हैं. बोले क्या? बोले सीधा चलते हैं मुच्छड़ के यहाँ. मुच्छड़ को बोलते हैं नाव देता है कि नहीं. मुच्छड़ बोलेगा नहीं. बोले फिर हो गया ना फैसला. दैट इज व्हाट ट्रम्प इज इन फ्रंट ऑफ चाइना. सो ट्रम्प इज राजपाल यादव who can act like he is having authority, he is having power. बट चाइना के सामने वो क्या हो जाता है? सॉरी, सॉरी. और ये चीज होती ही है. चाइना के साथ जब उसने प्रेशर बनाया था टैरिफ वगैरह का, चाइना वाज लाइक कि हम भी उतने ही टैरिफ लगाएंगे, चल भाई खेल लेते हैं अपन. तो हुआ ये कि there is particular a good like a good, like let's say it's pricing $1 at some particular store. If they are putting tariff on China, right? चाइना, so let's say वो उसकी कॉस्ट जो है वो 25 सेंट्स के आसपास बढ़ गई, तो चाइना will sell that particular goods in that like 25 cent, $1.25, and that will cost to American people itself. Yes. तो लोगों को ये सिंपली ये बात समझ में आ गई थी कि जो बैक टैरिफ है दैट कैन एक्चुअली क्रिएट इश्यूज, इसीलिए चाइना वाले केस में उसे बैक करना पड़ा. चाइना के साथ वो $1 ट्रिलियन से ऊपर का ट्रेड करता है, और उसमें सरप्लस चाइना के पास ही होता है. तो है प्रॉब्लम, है. तो यस, लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होती, होती है, चीजें महंगी होंगी. बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, वो ये है कि इंडिया की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी वीक हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा मेजोरिटी ऑफ जो पर्टिकुलर कहना चाहिए ट्रेड है, उसमें हमारे इंपोर्ट थोड़े से डोमिनेट करते हैं. तो हमारी इकोनॉमी में परचेसिंग पावर जो है उस पे थोड़ा सा लोड होता है, हमारी इकोनॉमी में अलग तरीके से लोड होता है. तो यस, हमारे के साथ हमें ट्रेड डील वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेजर आउटसोर्सिंग जो पर्टिकुलर सर्विसेज का पार्ट है वो अमेरिका से आता है. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. अमेरिका का भी हमारे बिना काम नहीं चल रहा है ना. अमेरिकन टेक जायंट्स देख लो, अमेरिकन कंपनीज देख लो, उसके सीईओज कौन है ये भी तुम्हें पता है, और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वही लोग हैं जिन्हें इंडिया से वहां भेजा गया था. बट इफ विल क्रिएट अ प्रॉब्लम दैट इंडियंस कैन नॉट बी देयर, that's a problem. Yes, I mean there is this particular saying. I've read it in one of the book. Americans have a very low IQ. You can see Donald Trump. Again, I'm not talking about all the Americans, but there are people who are so dependent that like if they got some problem in their vacuum, na, they forget भैया वो switch भी उन्होंने on किया कि नहीं किया, they forget to check about it. So है problem. तो ईडी ऑफिशियल्स वाली बात हमने कर ली थी. एंड
SC stays on Mukul Roy's disqualification from the Bengal Assembly. इस पर्टिकुलर न्यूज़ को एक बार पढ़ लेना, है ना? कि क्या पर्टिकुलर चीज़ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो है। लेट्स मूव टू मैं जिसकी बात करना चाह रहा था, दैट इज अगेन आरएसएस एंड मुस्लिम लीडर्स होल्ड डायलॉग कॉल फॉर द यूनिटी। यही खूबसूरती है भाई हमारे देश की। यस, पीपल पॉलिटिक्स के कारण लोग वो चीज़ नहीं देख पाते, दैट्स इट। बीजेपी अनाउंसेस शेड्यूल टू इलेक्ट a न्यू पार्टी चीफ। यस, भारतीय जनता पार्टी ने एक इलेक्शन शेड्यूल दिया है कि जो करंट नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है नितिन नबीन, राइट, वो फ्राइडे को पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में अनाउंस किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे और बाकी सब। एंड दिस वाज अ गुड न्यूज। होम मिनिस्टर कॉल्स लद्दाखी लीडर टू टॉक ऑन द February 4। यस, सो जो लद्दाख के लीडर्स हैं, जो लद्दाख की एपेक्स बॉडी है, दैट इज LAB, एंड जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, KDA, इनके लीडर्स को बुलाया जाएगा एंड उनसे बात की जाएगी। एंड दे विल मेजरली फोकस ऑन 6th शेड्यूल। एंड दिस इज लाइक प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जो सोनम वांगचुक है वो अभी जेल में है। यस, एंड तो वो एक डिमांड होगी, 6th शेड्यूल की डिमांड होगी, ट्राइबल स्टेटस की डिमांड होगी, स्टेटहुड की डिमांड होगी। एंड दीज ऑल पर्टिकुलर टॉक्स आर गोइंग टू हैपन ऑन February 4 with the Home Ministry itself. Let's hope for the best that they came out like with a solution, क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल गुड। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि सोनम वांगचुक को एज एन एक्टिविस्ट साइंटिस्ट ही इज एन इंस्पिरेशनल फिगर और उनको जेल में रखा जाए। ठीक है। Secretary General of Rajya Sabha has administrative role only, says court. Yes, the draft decision said MPs did not use the proper terms and quoted the wrong provision of the law. So यही कहना है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही प्ले करेंगे, लेजिस्लेटिव रोल प्ले नहीं करेंगे। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग भाई, और मतलब मैं भी बहुत दुखी हूँ। आई लव बनारस, राइट, एंड वन ऑफ द प्लेस where I find peace. So whether that is बनारस की चाय, whether that is बनारस की लस्सी, that is बनारस की चाट, सुबह की पूरी सब्जी हो, शाम की गंगा आरती हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, मणिकर्णिका घाट हो, I think the entire Banaras city, the old Banaras city is heritage. And whatever happened, right, in that Manikarnika Ghat, which was renovated by Ahilya Devi, Ahilya Bai Holkar, जो हमारे इंदौर से बिलोंग करती थी। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। यस, आई मीन लोकल पे लाइक बनारस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। बनारस मेरे ओरिजिनल होम टाउन से लाइक 140 किलोमीटर्स है। And it's a brilliant place. I mean, the entire city is heritage. The people are heritage actually. वो शाम को चाय पे बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करना, किताबों में स्टॉल में बैठ के किताबों के बारे में बात करना, राइट, एंड इट्स एक्सेप्शनल। बनारस के हर घर में तुम्हें मंदिर मिलेगा, हर घर में शिवलिंग मिलेगा, राइट, बनारस के हर गली में तुम्हें एक पुराना मंदिर मिलेगा एंड एवरीथिंग इज ग्रेट, बट व्हाटएवर इज हैपनिंग इज नॉट एट ऑल वेलकमिंग। आई हैव सेवरल फ्रेंड फ्रॉम बनारस एंड वन ऑफ देम टोल्ड कि भाई घाट को जो हेरिटेज है मणिकर्णिका घाट का, उसके सामने डब्बे जैसा ना एक बस स्टॉप बनाना चाह रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू डैमेज द हेरिटेज फॉर श्योर, राइट। हाँ, इट्स नॉट जस्ट बिस्मिल्लाह खान बच्चे। Yeah. Banaras is that particular place where you can found philosophers like Guru Nanak. He spent years there. Uh, Ghalib, he also spent there a lot of time over there. So yes, it's a different place. So what exactly is the thing? मैंने थोड़ा सा पढ़ा और फिर उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया था। Recently, like a few years back, there was a fire in France Cathedral. And काफी हिस्सा जो है उसको जल गया था, and then the French government decided to have a proper revamp of that particular what we can say place, but they made sure that the new structure looks exactly like old structure. They also put very keen detail on the glasses, the color panel based on the photographs they had, and they actually kind of uh,
spent like more than €1 billion to renovate that, and they made sure the original structure, the way it was, should be there. Yes. So first I had problem with this कि आपने पूरा का पूरा मंदिरों का एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करके आपने कॉरिडोर बनाया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. It doesn't look like that beautiful. You could have like maintained that particular place in a different manner. Then abhi Manikarnika Ghat. This is actually the oldest cremation places. And बोला जाता है कि यहाँ पे जिनका cremation होता है वो सीधे स्वर्ग जाता है. And that is not at all welcome. So yes, डिबेट ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट ना करें. डिबेट ये है कि हेरिटेज को मेंटेन करते हुए, हेरिटेज वैल्यू को मेंटेन करते हुए फिर जो है वो डेवलपमेंट किया जाए. यस. बाबा विश्वनाथ दरबार को बाबा लाइक विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नाम दे दिया गया. एंड यहाँ पे जो अब लाइक होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट है, दे हैव फाइल्ड अ केस कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे डिडंट केयर अबाउट द हेरिटेज लॉस एंड दे हैव destroyed it. Yes, and like ब्यूटीफुल प्लेस है वो. यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या चीजें होती थी. मतलब आप बैठ जाओ घाट के किनारे और नाव से चले जाओ, एंड जब सामने से आप गंगा आरती देखते हो ना, तो यू फील लाइक कि भाई साहब यहाँ कितनी एनर्जी. सी यस, आई एम ऑल्सो नॉट इन दिस पर्टिकुलर फेवर. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आई बिलीव उसे दूसरे तरीके से किया जा सकता था. बनारस से बहुत ज्यादा लगाव है, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. दीज आर सम गुड एडिटोरियल्स टू रीड, है ना. मेक श्योर ये वाला भी एक बार पढ़ना जो पर्टिकुलर बजट 2027 26 27 पे ज्योति वित्स का वो है ना. शी इज द चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फ्री चेयरमैन है. तो उनका क्या कहना है बजट के ऊपर. देन आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट इंडिया ईयू ट्रेड पैक्ट, फ्री ट्रेड पैक्ट टेक्निकली. जस्ट अ मिनट. Yes, according to Piyush Goyal, है ना, yes, the free trade agreement between Europe and India, European Union and India EU free trade pact, according to our Ministry of Commerce, Piyush Goyal, it's going to be mother of all deal. So let's say क्या है, मैंने इस डील के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया, लेके आया. Yes, मणिकर्णिका घाट इज अ क्रिमेशन प्लेस. 24/7 नहीं, मतलब लोग आते हैं, बॉडीज आती हैं, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डिफरेंट प्लेस. लोग मतलब मैं बताता रहा हूँ कि हम्म, अ, बनारस इज अ प्लेस जहाँ रैंडमली मैं बस्ता उठा के चला जाता हूँ. दैट इज बनारस फॉर मी. सो आई हैव मेट सेवरल गुड फिलोसोफर्स ओवर देयर, एंड दे डोंट हैव exceptional what we can say फेम, बट वहां पे आपको हर गली कूचे में प्रॉपर पॉलिटिक्स समझाने वाले लोग मिल जाते हैं. चाय की टपरी हो, बनारस का पान हो, बनारस की सुबह हो, बनारस का शाम हो. दिस ब्यूटीफुल. आई होप समडे यू विजिट एंड यू विल अंडरस्टैंड. चलो, सबसे पहले एक बात अलग अलग करते हैं ईयू इंडिया फ्री ट्रेड पैक्ट की. तो सबसे पहले जनवरी तक के स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है. सो जो करंट है, जो मैंने वेबसाइट से निकाला है वो ये है कि नेगोशिएशन प्रोग्रेस में है. 20 आउट ऑफ 24 चैप्टर्स ऑफ एग्रीमेंट हैव बीन क्लोज्ड. मतलब आउट ऑफ 24 डिफरेंट चैप्टर्स 20 हमने कंप्लीट कर दी विद द प्रॉपर negotiation, proper daily discussion, right. Remaining are supposed to be closed by 27th of Jan. So इतने chapters हैं and we are left with 4. Then the EU Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa will co-chair the upcoming summit for this. अभी उनको मिस कर गया, बट जो EU की वो है चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, शी इज गोइंग टू बी द
रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट, राइट? सो ये भी ध्यान रखना। नाउ जो जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है इंडिया और ईयू की डील में, जो मेन कंसर्न है डिस्कशन का, जिसके कारण ये पर्टिकुलर डील और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर बोथ द रीजंस, इज द जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी टू डी रिस्क द सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना and diversify the trade response to the high protectionist tariff from the US। इन दोनों पे उन्होंने बात की है। Okay, Sahil, can I visit every month? And in my opinion, Banaras is nothing more than an overcrowded place. Sahil, like मुझे भी ऐसे ही लगता था, but when I started growing up ना, when I started interacting with the people, when I started learning about the history ना, I loved that place। गिव इट अ टाइम। ये शहर समय मांगता है, ये शहर तुम्हारी मेच्योरिटी भी मांगता है। खूबसूरत है वो। चलो, सो इंडिया ईयू का मेन पर्टिकुलर जो डिस्कशन है वो है जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी। क्योंकि एक साइड हमारे पास चाइना है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दूसरी साइड ट्रम्प है जिस पे भरोसा होगा नहीं। पहले भी नहीं था, that was not like this, but at certain point the European Union had started trusting the Americans, NATO and other things, but the way this moron is doing, I don't think Europeans are going to trust him at all। So they want कि ना तो हम इसकी सप्लाई इसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ना इस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। वी शुड हैव अ डील जो हम दोनों के बीच में वो करके आए। नाउ जो की एरिया जिसमें भी डिस्कशन बाकी है, जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसमें बात करें तो ऑटोमोबाइल वाला जो पार्ट है, नालाल, लाइक ऑटोमोबाइल, राइट। देन जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी है, जिसमें हम थोड़े से ज्यादा आगे हैं। एंड देन सर्विस लेबर मोबिलिटी, यस। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सिक्योरिटी कह सकते हो। सी चार बेसिक पर्टिकुलर चीजें हैं जिसपे अभी भी डिस्कशन हो रहा है। यस, ऑटोमोबाइल एंड स्पेट्स, ईयू इज पुशिंग टू स्टीप टैरिफ कट्स ऑन कार, currently exceeding more than 100%। मेडिकल डिवाइसेस, वाइन्स एंड स्पिरिट, हम इस पे डिबेट कर रहे हैं। जो सीबीएम है ना, ईयू का जो कार्बन टैक्स है, यस, दिस नोन एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उस पे वो चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड में वो टैक्स हमारे लिए कम रहे, जिससे हम ज्यादा स्टील, एल्यूमिनियम एंड सम अदर पर्टिकुलर चीजें जो है एक्सपोर्ट कर पाए। Agriculture and dairy, these sectors are largely being excluded from the main deal to protect the millions of Indian subsistence farmer, a non-negotiable red line for New Delhi। So वो चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाले पार्ट है जिसमें हम सेल्फ सस्टेनेबल है, उसमें यूरोपियन यूनियन का घुसना ना हो। So that is another part of the discussion। And India seeks a better access to professionals, right? Mode 4 labor mobility, particularly in the IT, healthcare, in दोनों में चाहिए, while the EU has concern regarding the data protection and sovereign data localization। So these are the four places जहाँ पे they still want कि उसका डिस्कशन पूरा हो जाए। 27th ऑफ जनवरी तक मोस्ट ये हो भी जाएगा। 26th ऑफ जनवरी को जो अर्सुला वैन डेर जो चीफ गेस्ट बन के आ रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली 27th को वो साइन हो जाएगा। नाउ जो इंडिया की तरफ से इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्सेस है वो ये है कि दी एफटीए will provide a duty-free access to 20 trillion market or 450 million customers of the uh, European Union। The key beneficiary sectors include textile, leather, gems and jewelry, pharmaceutical, which currently faces 12 to 16% tariff from there। वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के लिए द फर्म एक्सपेक्ट्स बेटर एक्सेस टू इंडियन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर मार्केट, particularly on the high-tech machinery, aircraft part and chemical। और जो इन्वेस्टमेंट है कि भाई साहब, दैट इज सपोज टू हैव लाइक 140 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन ट्रेड के फॉर्म में स्टॉक्स में इंडिया में आने वाला है। सो यस, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डील इफ इट कम आउट, एंड इट्स अ टाइमली नेसेसिटी फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन द वे चाइना एंड अमेरिकन आर एक्टिंग। सो इसको थोड़ा सा वो करके रखना है ना। इसका ओरिजिनल जो प्रपोजल था, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन पे भी बात कर लेते हैं इंडिया ईयू पैक्ट।
सो ओरिजिनली जो टॉक है वो 2007 से शुरू हुई, राइट? इट वाज सस्पेंडेड अंटिल 2023, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। फिर जून 2022 से ये वापस शुरू हुई है, अल्टीमेटली अब ये फाइनलाइजेशन की तरफ आ चुकी है। And in October 2025, India implemented the similar landmark trade pact with the European Free Trade Association, EFTA, comprising the Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, which include 100 billion investments. तो इंडिया का वेलकम और ऑलरेडी यूरोपियन नेशंस करने लगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी फाइनलाइज दिस डील एज वेल एंड वी कैन गेट सम what we can say better outcome from this deal, output from this deal, right? So that is what is, make sure कि इसको मिस नहीं करेंगे, इसको प्रॉपरली अपने नोट्स में रखेंगे, ठीक? और फिर वही चल रहा है भाई साहब, ईरान यूएस after crackdown the protest has started going slower, and people have started understanding कि भाई इसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ है, अमेरिकन का और इसराइल का। तो थोड़ा सा वो भी फॉरेन इंटरफेरेंस की जगह खुद के उसमें फोकस करें, सो इट्स अ गुड थिंग। मैंने बोला था अमेरिकन सॉरी ईरानियंस के दो दुश्मन है, एक रेजीम, दूसरा अमेरिका। तो इन दोनों से बच के कुछ नया करना था, दे आर डूइंग बेटर। सो एक बार उसको फॉलो कर लेना। Nepal's largest party divided ahead of the poll, EC decided on legitimacy dispute। So जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो सबसे पुरानी पार्टी है वो थोड़ा सा डिवाइडेड हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अ, एक कैंप को डेडलाइन, मतलब एक डेडलाइन दे रही है कि भैया आप अगर भर सकते हो नॉमिनेशन तो भर दो। तो इसको एक बार फॉलो कर लेना। रेस्ट, गाजा का पीस प्लान सेकंड फेज में आ गया है, फूड शॉर्टेज अभी भी है, कुछ नथिंग एल्स, एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर टुडे। राइट, स्टार्ट करें फिर, यस और नो? रेडी फेलास? चलो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज तो क्वेश्चन बड़ा मतलब धमाकेदार तरीके से विजिबल होगा। So Supreme Court rejected the Justice Yashwant Verma's petition challenging the formation of an inquiry committee under which act? कौन से एक्ट के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है? ऑप्शंस आर जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। बताओ। लाइक जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी जैसा कुछ चीज है अभी फॉर नाउ। ओके, साहिल का कहना है बी, दक्ष का भी कहना है बी। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, जजेस इंक्वायरी एक्ट। इसके अंडर उन्होंने पिटीशन क्या की, कैंसिल किए बच्चे। सो थोड़ा सा ध्यान रखना रिश्वत बेटा। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर जजेस शुड नॉट बी, राइट? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है जजेस का, वो क्या नहीं होना चाहिए? बी, कोडिफाइड बाय द पार्लियामेंट, ओवरराइड जुडिशियल रिव्यू, पैरालाइज द रिमूवल प्रोसेस, और बी, एक्सरसाइज बाय द एमपीस। सो कौन सी ऐसी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है जजेस के लिए क्या रोड़ा नहीं बनना चाहिए? जो भी रिसेंटली इस जसवंत वर्मा के केस में बोला गया, मैंने पढ़ा भी था शायद स्टेटमेंट। वेरी गुड ऋषपर्णा, वेरी गुड साहिल। द करेक्ट आंसर इज सी, इट शुड नॉट पैरालाइज द रिमूवल प्रोसेस। कि भैया हमको सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है कि आप तो सिर्फ इन हाउस इंक्वायरी से ही मुझे हटाओ, मुझे इम्पीचमेंट या लोकसभा राज्यसभा का वो नहीं चाहिए, राइट? दैट इज नॉट राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, which constitutional authority admitted the motion for the removal of Justice Yashwant Verma? इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट जो मोशन था उनके रिमूवल के लिए वो एडमिट किया था? ऑप्शन है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताओ।
हम्म। हम्म। द करेक्ट आंसर इज लोकसभा स्पीकर। यस। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। सो पीछे जाओ थोड़ा सा, राज्यसभा एंड लोकसभा वाले मैटर में। तो राज्यसभा में ऑपोजिशन एमपीज ने वो मोशन फाइल किया था, एंड जो हमारे फॉर्मर वो थे, चेयरमैन थे एंड वाइस प्रेसिडेंट थे, जगदीप धनखड़, उन्होंने एक्सेप्ट करने का वो किया था, which was later on accepted by like जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उन्होंने प्रोसेस कराया था, बट द फर्स्ट मोशन जो प्रॉपरली, अच्छा उसको बाद में रिजेक्ट किया गया था, एंड प्रॉपर मोशन वाज ब्रॉट इन द लोकसभा बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो जो एक्सेप्टेंस था मोशन का, एडमिटेंस था मोशन का, दैट इज फ्रॉम द लोकसभा स्पीकर। इसको ध्यान रखेंगे जस्टिस जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टेड मुकुल रॉय's disqualification primarily due to a non-compliance with which provision of law? सो मुकुल रॉय का जो पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है ड्यू टू अ नॉन कॉम्प्लायंस विद अ प्रोविजन ऑफ लॉ। सो वो प्रोविजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 102 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल, सेक्शन 65 बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। यस, ओम बिरला जो हमारे स्पीकर है उन्होंने एक्सेप्ट किया था। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके। द करेक्ट आंसर इज सी, सेक्शन 65 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको मुकुल रॉय केस को एक बार, मुकुल रॉय डिस्क्वालिफिकेशन केस को एक बार प्रॉपरली पढ़ना, है ना। आई नीड यू गाइस टू रीड इट प्रॉपरली। चले नेक्स्ट। In the Mukul Roy case, the Supreme Court criticized the High Court for relying on which standard of proof? हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया प्रूफ के केसेस में? मुकुल रॉय डिस्क्वालिफिकेशन केस में ऑप्शंस आर प्रूफ बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, क्लियर कन्विक्शन कन्विंसिंग एविडेंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, या प्रीपॉन्डेंट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। बताओ। अच्छा, तुमने केस ही नहीं पढ़ा प्रॉपरली तो तुम्हें क्या होगा? दैट इज डी, प्रीपॉन्डेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, ना ना ना, क्लियर कन्विंसिंग एविडेंस नहीं, प्रीपॉन्डेंस अपॉन्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस पे बात करी उन्होंने। ठीक है, इसको पढ़ के आओगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। Next is which High Court stayed police action against the Enforcement Directorate official and ordered Central Security Forces security cover? So किस हाई कोर्ट ने ईडी के अगेंस्ट पुलिस एक्शन को स्टे किया है और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को कवर देने के लिए बोला है? ऑप्शंस है पटना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। बताओ मित्रों। सी, हाँ, वेरी करेक्ट। ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, दैट इज सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The Jharkhand High Court directed security for ED offices to the be provided by which type of forces? So किस टाइप की फोर्सेस को उन्होंने वो किया है, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है ईडी ऑफिशियल्स के लिए? स्टेट आर्म पुलिस, होम गार्ड्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज? बताओ। सी, अपन ने बात भी की थी कि सीआईएसएफ की बात की है कि सीआईएसएफ शुड प्रोवाइड द सिक्योरिटी, एंड दैट इज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, चलो। The Indian seafarers detained by the Iran were allegedly accused of smuggling what? जो इंडियन सीफेरर्स हैं उन्हें किस चीज की स्मगलिंग के लिए ईरान में डिटेन किया गया? क्रूड ऑयल, डीजल, आर्म्स और लिकर? बताओ।
अरे ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया भी था तुम्हें अभी। डीजल, डीजल बच्चे लोग, डीजल मैंने बोला भी था कि उन 16 लोगों को डिटेन किया गया है क्योंकि वो डीजल की स्मगलिंग कर रहे थे। You remember that? चले, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। The detention of Indian seafarers were argued to the violation of which international convention? कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए वॉयलेशन माना जाएगा इंडियन सीफेरर्स को डिटेन करना? ऑप्शंस आर यूएन सी लॉस, दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी, वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006, जेनेवा कन्वेंशन। बताओ। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006। यस, यूएन सी लॉस जो है, राइट, जो कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सी है, दैट इज डिफरेंट। ये बात करेगा हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज की, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, एंड अदर चीजों की। बट मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन इज समथिंग जो कि यहाँ पे वॉयलेट होगा क्योंकि वो वहां पे काम करने के हिसाब से गए थे। नाउ, इंडियाज सैंक्शन वेवर फ्रॉम द यूएस फॉर ऑपरेटिंग द चबहार पोर्ट इज वैलिड टिल। इंडिया को कितनी टाइम तक के लिए सैंक्शन वेवर मिला है फ्रॉम द यूएस फॉर ऑपरेटिंग द चाबहार पोर्ट? ऑप्शंस आर जनवरी 26, मार्च 26, अप्रैल 26, दिसंबर 26। कम ऑन, इस पे भी बात की है, सो आई होप तुम करेक्ट आंसर दो। आज तुम्हारी तरफ से करेक्ट आंसर्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं, एंड आई लाइक डिडंट लाइक इट। पढ़ाई नहीं करी क्या? ओके, साहिल इज सेइंग सी, यश पढ़ना वेरी गुड, दक्ष वेरी करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी, अप्रैल 26, 2026। जी हाँ, आपने बात भी की है कि अभी हम 26 तक का हमारे पास वो है। ओके, which constitutional schedule is demanded by the Ladakhi civil society group for a greater autonomy? अगर इसका आंसर गलत आया तो मैं तुम्हें पिटाई कर सकता हूँ। ऑप्शंस आर फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल, नाइन शेड्यूल। बताओ, किस शेड्यूल की डिमांड कर रही है लद्दाख की जो सिविल बॉडीज है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी करेक्ट, द सिक्स शेड्यूल। यस, थोड़ा सा पढ़ के आना कि सिक्स शेड्यूल में क्या मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट रिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट विच हेरिटेज स्टेट? इसमें से किस हेरिटेज स्टेट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेंट लगाया है फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज? ऑप्शंस आर लाल बाग स्टेट, कबोन पार्क, और रोशी देविका रानी रोशी रोश रोशी स्टेट, या बनेरघट्टा स्टेट। बताओ, क्योंकि हेरिटेज वाला पार्ट है तो वहां पे ये लगाया गया है। ट्वेल्थ का सी, वेरी करेक्ट, स्पर्णा वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, साहिल वेरी करेक्ट, करेक्ट आंसर शुड बी सी, जीनियस गाइस। The Union government blocked 242 illegal betting website under which law? IT Act 2000, Public Gaming Act 1867, Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025, या Consumer Protection Act 2019? ये भी इजी है एंड आई बिलीव तुम्हें आंसर आता है, सो गिव मी अ प्रॉपर आंसर। कम ऑन, वेरी गुड गाइस, जीनियस जीनियस, प्राउड ऑफ यू। न्यू ट्यूबर, ओके करेक्ट, द आंसर है सी। हमने बात करी भी थी कि लास्ट ईयर आया था रेगुलेटिंग उसमें।
Chalo, last two questions for today. Which European Union leader will be the chief guest of India's 77th Republic Day celebration? Options are Emmanuel Macron and Olaf Scholz, Ursula von der Leyen and Antonio Costa, Charles Michel and Joseph Borrell, Angela Merkel and Jean-Claude Juncker. ये तो इजी है, ये तो अभी बात करी है अपन ने. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस. यस, यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वो हमारे उसमें इस बार चीफ गेस्ट है. चले. According to Lok Sabha Speaker Om Birla, the democratic institution remain strong when they are. है ना, अभी रिसेंटली उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला था कि दे रिमेन लाइक स्ट्रॉन्ग when they are. So overall power, like options are powerful and centralized, popular and decisive, transparent, inclusive, responsive and accountable, traditional and rigid. बताओ. बताओ मित्रों. Very good. The correct answer is C. Genius guys, proud of you. Yes. So शुरू शुरू में तो तुम अटक रहे थे क्वेश्चन आंसर में, but then you find like proper pace. So this is it. I'll ask one more time to you guys. Right. अपन 7 a.m. करें कि नहीं? If you're not listening it live, then you can comment on it. क्या करें, 7 a.m. करें कि नहीं? मेरा तो मन है कि और मतलब 7 a.m. कर लेते हैं. What do you say, guys? Daksh, other people, और कोई? ओके, लेट मी पुट इट इन फ्रंट ऑफ टीम. मैं टीम को पहले बता देता हूँ कि क्या करें. देन फाइन डू इट. अदक्ष, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? हम डेमोक्रेटिक लोग हैं. वी एक्सेप्ट, वी लिसन, देन वी फाइनलाइज. राइट. सो एक बार मैं टीम के सामने रखता हूँ. जस्ट फॉर द लाइक दोस किड्स जो स्कूल जाते टाइम मिस करते हैं, सो आई डोंट वांट देम टू मिस. सो वी विल डिस्कस इट. Right, so this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed the session. I'll see you in the next analysis on Monday, most probably. And till then, life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See ya. Good day.